Assalamu alaikum. Welcome to Stenoworks with another passage of legal dictation. आज हम जो डिक्टेशन लेने जा रहे हैं वो एक लीगल पैसेज है जो कि 320 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। आपको बैकग्राउंड में जो है वो पैसेज नज़र आ रहा है। इस पैसेज का जो PDF है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस डिक्टेशन को देने का पर्पज़ ये है कि आप अपनी स्पीड को बूस्टअप कर सकें। मैं डिक्टेट करूँगा, आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर जो है वो रेडी हो जाएं। आप उसको जो है वो शॉर्ट हैंड में उसको लिखेंगे। शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद फिर उसको आप ट्रांसक्राइब करेंगे। ट्रांसक्राइब करने के बाद आप मेरा PDF डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है वो जो आउटलाइंस आपसे नहीं बनी या जो मिस हुई हैं उनको आप अंडरलाइन करके मैच करेंगे। एक्टिविटीज़ को हम मज़ीद कंटिन्यू भी करेंगे। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती जाएगी। जी, 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ आज मैं डिक्टेट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। द लर्निड डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक prosecutor gave up the prosecution witnesses as being unnecessary. Full stop. The learned deputy district public prosecutor gave up the prosecution witness and closed the prosecution evidence after tendering in evidence the reports of Punjab Forensic Science Agency, Lahore. Full stop. After the closure of prosecution evidence, the learned trial court examined the appellant under section 342 CRPC and in answer to the question why this case against you and why the PWs have deposed against you, he replied that he had been involved in the case falsely and was innocent. Full stop. The appellant opted not to get himself examined under section full stop. However, produced the certified copy of the application, the certified copy of the statement recorded under section along with the certificate as evidence in his defense. Full stop. At the conclusion of the trial, the learned additional sessions judge convicted and sentenced the appellant as referred to above. Full stop. The contention of the learned counsel for the appellant precisely is that the whole case is fabricated and false, and the prosecution remained unable to prove the facts in issue and did not produce any unimpeachable, admissible and relevant evidence. Full stop. Learned counsel for the appellant further contended that the story of the prosecution mentioned in the statement of the witnesses on the face of it is highly improbable. Full stop. Learned counsel for the appellant further contended that the statements of the prosecution witnesses were not worthy of any reliance. Full stop. The learned counsel for the appellant also submitted that the recovery of the case was full of procedural defects, of no legal worth and value, and result of fake proceedings. Full stop.
the learned counsel for the appellant also argued that the appellant had been involved in the occurrence due to enmity. Full stop. The learned counsel for the appellant finally submitted that the prosecution has totally failed to prove the case against the accused beyond the shadow of doubt. Full stop. On the other hand, the learned deputy prosecutor general along full stop दी एंड जी हमारी डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। अब इस डिक्टेशन को जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखी है इसको आप ट्रांसक्राइब करें। ट्रांसक्राइब करने के बाद फिर इसको एक दफ़ा आप रीड करें। रीड करने के बाद जो मेरा पीडीएफ डाउनलोड किया है उसके साथ आप इसको मैच करें। जो आउटलाइंस आपकी नहीं बनी, मिसिंग हुई है या जो आप पढ़ नहीं सके उनको अंडरलाइन करें और उनको अलग से उनकी जो है वो अलग से रजिस्टर पर उनकी आउटलाइंस बनाकर उनकी प्रैक्टिस करें। इस तरह से आपकी जो है वो शॉर्ट हैंड आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।